Hello everyone and welcome back to Every Child Matters. मैं हूँ दिव्या गोसाई, आपकी दोस्त और parental coach and guide. And like we had promised, we are ongoing with a series of 45 difficult behaviors in children and how to manage them. And we are back yet again with another video in the series. Today we're going to be talking about dawdling. So dawdling होता क्या है and what you can do to manage it. Let's start talking about it. Let's dive right in. सबसे पहले चीज़, जब बच्चे कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम करना हो और आपको लगे बहुत लेजी हैं या अपने ही दुनिया में मस्त है और टाइम को रिस्पेक्ट करके, टाइम लिमिट्स को फॉलो करके टाइम पे तैयार नहीं होते हैं, टेकिंग देम एनीवेयर, वेदर इट्स टेकिंग देम टू स्कूल फॉर स्विमिंग और सॉकर प्रैक्टिस, गोइंग आउट फॉर विद अ फ्रेंड और डिनर, whatever it is, they are not able to get ready on time or finish their task or adhere to a given time limit, then yes, that's called dawdling. Now, what you can do to help a child with it? Number one, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं, so you would know that there's a post which says that in parenting, practice what you preach. So टाइम के कॉन्सेप्ट को रिस्पेक्ट करना और उसे ठीक से फॉलो करना, ये बच्चे आपको ही देख के सीखेंगे. सो यू हैव टू मॉडल द सेम बिहेवियर. सो आई वुड टेल यू कि आप खुद पहले टाइम पे तैयार होइए और अपने लिए थोड़ा सा टाइम लेके चलिए कि अगर मुझे मेरे बच्चे को असिस्टेंस देनी होगी तो आई डू हैव 15-20 मिनट्स स्पेयर लेफ्ट विद मी to do it efficiently and it does not become a stressful situation that I lose my cool on the child और फिर वो रोना धोना और वो एक negative experience बन जाए आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी. And when you do that, so make sure that you're giving your child or teaching them a concept of a time. तो because we have gotten too used to it, we don't realize it, but हमारे parents ने भी हमें time का एक concept समझाया था, सिखाया था. Now being parents, it is our turn to do the same for our children. So the best way you can do is having visual timers. This will really help in giving your child an idea about the concept of time और उसकी वैल्यू क्या है, क्यों हमें टाइम पे तैयार होना चाहिए. बेसिकली दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट एंड विच इज़ कि गिव देम इंसेंटिव्स. कुछ आप बात करती रहिए, अरे हम वहाँ जाएंगे ना तो दादी रेडी रहें तुम्हारे लिए, आई एम श्योर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा अगर दादी तुम्हारे लिए वेट करती रहेंगी, उन्होंने खाना बना रखा है, वी हैव टू गो, योर फेवरेट डिश इज मेड. सो कीप टॉकिंग अबाउट द प्लेस दैट यू हैव टू गो ताकि बच्चे को कोई एक इंसेंटिव मिलता रहे, उसके दिमाग में रहे ओके ये चीज़ मुझे मिलनी है तो मुझे जल्दी जल्दी से तैयार होना है. दैट इज़ द रिवॉर्ड दैट इज़ वेटिंग फॉर मी. सो इट विल एक्ट एज अ मोटिवेटर. Now, coming to the third point, you can make this playful. So you can play games like beat the clock. तो आप बच्चे को विजुअल टाइमर दिखा के बोल सकते हैं कि जब ये पूरा सैंड इधर आ जाएगा ना तब तक हमारे पास ये गेम है और हमको ना तब तक ब्रश करके अपना फेस वॉश करके फटाफट डाइनिंग टेबल पे पहुँच कर मिल्क फिनिश करना है. और हमने ये कर लिया, सो वी बीटन द क्लॉक एंड वी वन द गेम. So you can make it more interesting and innovative and creative for yourself and for your child. And fourth thing, please do appreciate a child on every step of it. ऐसा नहीं है कि वो कोशिश तो कर रहा है but just because he could not finish his milk on the given time, we are not even acknowledging that and giving a child motivation and reward for it. So appreciate every step so that बच्चे को और मोटिवेशन बनती रहेगी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप भी करना है, नेक्स्ट स्टेप भी करना है. फर्स्ट उसमें निराश होकर ना बैठ जाए कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता. So you have to keep building the tempo and the momentum and the motivation of your child. And finally is what we call the grandma's rule, नानी दादी का rule. तो or what I like to call is the when then statements. So आप बताइए अपने बच्चे को, अगर उन्हें कोई गेम खेलना है and he or she does not want to get ready at that time, so you can say जब हम ready हो जाएंगे और हमारे पास 10 minutes extra होंगे तब आप अपना ये गेम खेल लेना. So when you get ready on time and we will have 10 minutes to spare, then we'll play your game. Or when you get ready on time and we are on our way to the car, then you can play with your game in the car.
So use when then statements to put things in perspective for your child. Please try all of these things out and do let me know if they work out for you. These are, again, I would like to reiterate, research based, proven, true experience, tried and tested methods that do work for larger audience generally speaking. But if they don't work for you, do not get disheartened. Please come back to me. मुझे DM करें. Reach out to me. I'll be more than happy to help you. And if there is anything else that you tried and that worked out fantastically, please do share it in the comment box. Or if you tried these and something worked for you, something didn't work for you, share your experiences with me. It keeps me motivated and tells me what my audience is like, और आप लोग क्या और ज़्यादा जानना चाहेंगे और मुझे क्या और details अपने videos में देनी चाहिए. So see you next time. Till now, bye bye. Take care.